Good morning, all of you. Sorry for the interruption. Today, actually, the meeting ID was changed from the NIMI department. Yesterday, I received one meeting ID through mail. I communicated that all mail into your groups. But morning, from NIMI department, they are telling another meeting ID. So, due to that reason, some miscoordination. So, due to that reason, it will reach the up to this time. Sorry for the interruption. No problem. We have a little bit time, half an hour. So I want to discuss this internet. Today, our topic is internet. So friends, in previous classes, we are discussed about the networking topologies, types of networkings, and networking communications means media, cables. But in this morning, we are discussed about the networking. So here, sorry, internet. So before going to the internet, once again, I want to give a little bit recap what is meant by the networking. You know very well about that one. आपको सबको पता है इंटरनेट का नेटवर्किंग का बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले हफ्ते दिन से और कल भी है तो लेकिन आज इंटरनेट शुरू करने वाले हैं आई वांट टू स्टार्ट द इंटरनेट सो बिफोर डिस्कसिंग द इंटरनेट वी वांट टू विल गिव टू ए लिटिल बिट recap. A network is a collection of computers that are connected to each other with the help of cables or satellite to share the information around the world. So that is the main aim of the network. Network का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपस में कंप्यूटर्स को और कंप्यूटर डिवाइसेस को नेटवर्किंग का साथ जोड़ने की वजह से हम कंप्यूटर का रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस मींस प्रिंटर फ्लोटर स्कैनर्स वगैरह जो भी है तो उसको शेयर करने के लिए. ओके, सो देन इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. देखिए इंटरनेट जैसे आपको एक नेटवर्किंग के बारे में समझ में आ गया तो फिर इंटरनेट का बारे में आप समझ सकते हैं. ले आदमी मीन्स आम जनता दे आर यूजिंग now it means normal people also using the internet through WhatsApp, through mobiles, that thing and another matter. But as an IT students, first of all we will try to understand the what is meant by the networking, then after that internet. So internet is a network of networks. So due to that reason I am giving the once again the definition. A network is a collection of computers that are connected to each other to share the information around the world. So आपस में एक कंप्यूटर्स को नहीं तो कंप्यूटर डिवाइसेस को नेटवर्किंग के साथ जोड़ने की वजह से हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं रिसोर्सेज प्रिंट स्कैनर वगैरह उसको हम हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. लेकिन अब सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क से तो हम एक बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस के अंदर शेयर कर सकते हैं मैन वर्ड वगैरह हमने डिस्कस किया है. लेकिन अब उस इंटरनेट का मतलब ये है इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ठीक है, आपस में बहुत सारे नेटवर्क्स तो ग्रुप को ही कहते हैं हम इंटरनेट. इट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स. देयर आर सो मेनी टर्म्स आर देयर फॉर इंटरनेट. इंटरनेट के लिए अलग अलग शब्दों से हम कहते हैं दुनिया पर. ओके, सो फर्स्ट वन इज इट इज ए नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. Second one is worldwide networks of the computers, or global network, or global village, or huge information highway, or somewhere wide world also. It is also called as a wide web. So okay. Then we will discuss about the little bit history of the internet. Actually, the internet, the principal founder was starting from 1950. In between 1960. Okay, in 1957, the United States of Department of Defense established ARPA, Advanced Research Project Agency, for technical research purpose. ठीक है, सो यूएस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले क्या किया है ARPA नाम से एक नेटवर्क को डेवलप किया है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम से in 1957. इसका मुख्य उद्देश्य ये था टेक्निकल रिसर्चेस को शेयर करने की technically researching work के लिए. Further they are developed and introduced in 1969
they are ARP designed a network of 4 computers to exchange and share the data. बाद में क्या किया इन्होंने 1959 में 1969 में वही ARP नेटवर्क द्वारा 4 कंप्यूटर्स को 4 नोड्स को जोड़ के फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, डाटा को शेयर करने का फंडा इंप्लीमेंट किया. The purpose was to distribute the information between geographically dispersed computers. Later on, US Department of Defense allowed the universities to join this network for sharing hardware and software resources. So बाद में the same वही US Department ARP network द्वारा उन्होंने यूनिवर्सिटीज को अगर उसको ज्वाइन करने के लिए कहा, जोड़ा है यूनिवर्सिटीज का साथ. फॉर व्हाट पर्पस? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अगर कंप्यूटर्स का हार्डवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इत्यादि रिसोर्सेज को शेयरिंग करने के लिए. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. ओके, सो इन 1971 1971 में मोर नोड्स आर जॉइंड द नेटवर्क. सबसे पहले 1969 में क्या है, सिर्फ 4 नोड्स को ज्वाइन करके एक नेटवर्क को फॉर्म किया है. फिर बाद में यूनिवर्सिटीज को इन्होंने ऑफर किया, यूनिवर्सिटीज का साथ ज्वाइन करके फिर नेटवर्क शेयरिंग, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर वगैरह रिसोर्सेज को शेयर करने का काम किया है. फिर आफ्टर 3 years मींस 2 years 1971 मोर नोड्स आर ज्वाइन इन द नेटवर्क. दीज न्यू नोड्स आर इंक्लूडेड हार्वर्ड एंड नासा. नासा डिपार्टमेंट आप लोग सब जानते हैं, तो इनको भी इन्वॉल्व किया है. In 1974, TCP transmission control protocol. This is used for data transmission purpose. They are introduced. Then after that, in 1982, TCP by IP transmission control protocol or internet protocol. First of all, they are defined in the internet. तो 1974 में क्या किया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम से प्रोटोकॉल्स को परिचय किया है. प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ द रूल्स गवर्न टू कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क. नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन को फॉलो करने के लिए एक प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया है. सो स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर टू गवर्न द कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क्स. ओके, सो इन 1974 the TCP means transmission control protocol was introduced for data transmission. In 1982, TCP/IP transmission control protocol/internet protocol firstly defined of the internet purpose. They are introduced in 1982. Then after that, in 1991, Tim Berners-Lee developed in WWW, World Wide Web, जो nowadays we are using in the internet. So that was developed in 1991, Tim Berners-Lee. Okay, so then after that, in India, internet services were started on 15th August 1995 through a government-owned company, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. हमारा भारत में क्या है, 15 अगस्त 1995 1995 में क्या किया है, हमारा गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी मींस BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. सब लोग जानते हैं BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड. तो उसी तरह ये विदेश संचार निगम लिमिटेड, तो इसका द्वारा क्या किया है, 15 अगस्त 1995 से इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज शुरू किया. प्राइवेट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड लाइक एयरटेल, रिलायंस, सिफी, टाटा. अभी तो बहुत सारे आए हुआ, आप लोगों को पता है. ठीक है, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट वन. सो अभी private agencies, Airtel, Reliance, Sifi, Tata, all these are providing the internet services. ISP, ये शब्द सुना होगा आप लोग, you are listen this one. Internet service providers, they are organizers which provide internet connection to the users. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो यूजर के अंदर में कंपनी मान लीजिए फैक्ट्री, इंडस्ट्री या तो होम साइड, they are providing the internet services. ISP is one of the organization agency. It can provide the internet services to the end users. That may the end user may be a company, factory, industry, or individual operate person also, or home side. So now friends, internet uses the standard internet protocols. These are called as TCP/IP, transmission control protocol by internet protocol. Every computer in internet is identified by a unique IP address. I want to give a little bit clarification of the internet. मतलब एक सिंपल स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरा ITI स्टूडेंट्स है 10th पास्ड, ओके, मैक्सिमम 12th. So their purpose I want to give the simple fundamentals. So here in every computer in the internet is identified by a unique IP address. IP address is a unique set of numbers, such as suppose for example
110.22.33.114, which identify a computer location. A special computer DNS, domain name server, is used to give a name to the IP address so that user can locate a computer by a name. Suppose whenever using or accessing internet, so through our IP address, we can identify which computers user can access the data from which locations, all these things. सो मेरे कहने का मतलब ये कंप्यूटर आईपी एड्रेस द्वारा ही हम इस कंप्यूटर का लोकेशन मान लीजिए कंप्यूटर नेम वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इसलिए इंटरनेट पर जुड़ा हुआ प्रति कंप्यूटर के लिए एक यूनिक मीन्स इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट आईपी एड्रेस देगा. सो दैट आईपी एड्रेस वाज असाइन्ड बाय दिस डीएनएस डोमेन नेम सर्विस सर्वर. A special computer DNS domain name server is used to give name to the IP address so that user can locate a computer by a name. A DNS server will resolve a name. For example, http://www.nstinoida.ac.in. A particular IP address to uniquely identify the computer on which this website is hosted. Suppose this nstinoida.ac.in. This is the website of our institute. So through this domain, it can identify in which computer this website was hosted. Internet is accessible to every user all over the world. So internet अगर एक डिवाइस मान लीजिए एक मोबाइल एक कंप्यूटर कोई भी एक डिवाइस इंटरनेट का साथ जुड़ा हुआ है तो हर इंसान दुनिया पर जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं. There is no limitations means rich, middle, low or illiterate, educated. Such type of there is no boundaries and limitations. Every person can access the internet. So uses of internet. So friends, as a IT students, you know very well about the uses of the internet. Not only the IT students. Nowadays, school students are normal human beings also, they can have a minimum idea upon the internet. But these things are in our syllabus. So I want to cover this one. Okay. So friends, these are the various uses of the internet various fields. Suppose education, mailing letters, business, e-commerce, media and entertainment, news and information, social networking, then health and fitnesses, e-services, searching information, etc. For your convenient purpose, as a teacher, I was given the 10 examples. So in every way nowadays, in every area, in every field, we are using the internet. Okay, especially I was given for your sake of some examples. आजकल दिन में इंटरनेट को हर मतलब फील्ड में काम में ले रहे हैं, सभी को पता है. लेकिन सपोज आप किसी कई बार इंटरव्यू वगैरह फेस किया मान लीजिए, नहीं तो स्कूल्स वगैरह में आफ्टर कंप्लीशन योर CSA कोपा, इफ यू आर ज्वाइंड एज एन इंस्ट्रक्टर और इफ यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, सो आपको पता तो चलता है कैंडिडेट के पास नॉलेज तो है लेकिन बता नहीं पाते. तो कैंडिडेट कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर देयर पर्पस. सो आई वांट टू डिस्कस लिटिल बिट एग्जांपल्स, द 10 examples. So various uses of the internet is education, mailing letters, business, e-commerce, media and entertainment, news and information, social networking, health and fitness, e-services and searching the information. Now please look at here. Traditional learning system, people to learn any time, anywhere and anywhere. Nowadays lockdown was implemented in India. Not only this one, in entire world also due to the coronavirus. So you people know very well about that thing. So nowadays you are sitting in your home and attending the classes through this virtual concept, online classes. So here what I'm telling, the traditional learning systems, NIT, IIT वगैरह जो इनके इसमें क्या होता है, they are also conducted the virtual classes. And nowadays in schools also. So if any specific specialized subject is there, that subjects are not able to teaching or showing the practicals every normal person. So such type of specialized subject teaching purpose, they can arrange this internet classes. So at one place, at one location, they can teach the class. In remaining other in all over world, anywhere, they can attend that particular class.
These are called as virtual classes. So you know very well about that one. So in educations, they are using like that, not only conducting classes, but teaching subjects or some other information. Also, they can get the students can get the information through the internet. So traditional learning system, people to learn anytime and anywhere, widely used by students, scholars, as well as teachers for research and education. I think you people have some idea. If a student is fresh student after passing the 10th or 12th, maybe due to the below mind maturity, that particular student cannot have an idea of the researchers and scholars. In IITs, NITs, or any big universities, if a student is doing some PhD, so junior research fellowship and senior research fellowship, so they are scholars कहते हैं हम इन लोगों का. So उनको भी education से net they can do their education through internet. Okay, so now friends, second one is the mailing letters, emails, send and receiving messages for free. We can attach pictures, videos, sounds and our emails and send them to anywhere around the world. तो सबको पता है. So one of the main advantages mailing communication. So you can send your mails information for entire world. मान लीजिए before introducing this electronic mail, emails or mailings, human beings can send their communication through postal departments, or they can send special messengers. If it is an urgent, confidentially, or sometimes they can what they can do a departmental to department communication, or some highly confidential information, they can send that entire information through a special messenger. कई बार क्या होता है ऑफिस के अंदर कंपनी में फैक्ट्री में कई बड़े डिपार्टमेंट्स में क्या होता है रिसर्च एंड डिफेंसिव वगैरह, तो कई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं एक स्पेशल इंसान का द्वारा डिपार्टमेंटल पर्सन का द्वारा इन्फॉर्मेशन को पैक करके सील करके फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर भेज देते हैं. सो दैट विल टेक टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम किलिंग. Even postal also it will take minimum 2-3 days. If it is a long distance, it will take more days. But here what I'm telling, whenever the internet is introduced in the world, then through this internet email concept, electronic mails, you can send our information from one location to another location, anywhere in the world, within a fraction of seconds, free of cost. So you can send that information anytime. That is the main advantage. Day and night, 24/7. Then there is no limitation to send the information, only text related information. You can send the text related information. Along with that information, you can send the pictures, videos, sounds, all type of information you can send it. Email concept इंटरनेट नेटवर्किंग के बाद इंटरनेट का साथ परिचय करने के बाद क्या हुआ, कम समय के अंदर दुनिया पर कई कार्नर पर आसान तरीके से तुरंत भेज सकते हैं. सपोज head office conduct a meeting, they are invited all the branch office managers or officials. If they are asking some particulars, that information is available in their own office, means branch office. Suppose Delhi located at head office, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Calcutta, they are having branch offices. So these officials are attended this meeting at head office Delhi. If they need some information, so nowadays what happened, that particular information purpose, these officers can communicate that individual, their branch office staff members, they can scan that particular document, then immediately send that scanned information through emails. So on this part they can receive the information. So that is the advantage. मेरे कहने का मतलब ऑफिस के अंदर जो पर्टिकुलर सपोज इंफॉर्मेशन डिटेल्स परचेजिंग सम अदर इंफॉर्मेशन, so if in head office they are asking the details, the officer is forgotten in their branch office, so through this internet they can communicate that branch office subordinates, immediately they can scan that document and send that information through email within a fraction of seconds. So that is the main advantage of this internet, mailing letters. Through communication we can send the information, text or pictures, videos, sounds, whatever it may be. So friends, actually sorry for the interruption. Morning some technical issue was raised, so due to that reason we are joined with too late.
No problem. So I will conduct this class. That madam was telling the NIMI department they are assigned another schedule on Saturday, or maybe I can extend in the next week also. So I can complete this entire networking and internet topics to my students, COPA, CSA, DTP, and DTPO. So for morning issue purpose, really I want to say sorry for the interruption. We will meet once again tomorrow at the same time 9 o'clock. I can communicate that IDs strictly. Okay. Thank you for attending this class. Sorry for the interruption. Thank you, friends. I have another lecture, 10 o'clock VBA. So due to that reason, now I want to wind up this session. Thank you once again. Thank you. Huh?